नाउ इज द डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास डिफरेंट रेट हैं। नो डाउट हमारे पास जो रेट बैंड है वो सेम है, बेसिक, हायर एंड एडिशनल। तो इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करने के हवाले से जो टैक्स रेट हैं दैट आर क्वाइट डिफरेंट। फॉर नॉन सेविंग इनकम डिफरेंट हैं, सेविंग इनकम के हवाले से नील रेट बैंड भी अप्लाई होता है, स्टार्टिंग रेट भी अप्लाई होता है, डिविडेंड इनकम के रेट डिफरेंट हैं। और आगे जाके हम पढ़ेंगे अबाउट द कैपिटल गेन टैक्स रेट, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन हासिल हो तो रेट डिफरेंट है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रेट गेन हासिल हो तो उस पर टैक्स रेट डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। सो हियर आर द रेट फॉर द डिविडेंड इनकम that up to 37,700 of his income will be taxed at 8.75%। डिविडेंड इनकम की बात हो रही है कि जितनी इनकम आपकी 37,700 के रेट बैंड में आती है डिविडेंड इनकम, वो 8.75% पे टैक्स होगी। अगर कोई डिविडेंड इनकम आपकी इससे अबव पे आ रही है, यानी हाई रेट बैंड पे बिटवीन 37,701 to 1,50,000, it will be taxed at 33.75%, and if it is above 1,50,000 then the tax rate are 39.35%. Dividend received from a company are charged to income tax in the tax year in which they are received। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस साल आपने रिसीव किया उस साल ये टैक्स होगा। हाँ, डिविडेंड के हवाले से भी नील रेट बैंड है, लेकिन इसका रूल ज़रा सिंपल है कि इन एवरी केस द फर्स्ट 2,000 डिविडेंड रिसीव्ड इज़ कंसिडर्ड एज डिविडेंड नील रेट बैंड, मीन्स उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना किसी भी केस में, चाहे आपकी इनकम बेसिक रेट बैंड पे है, हायर रेट बैंड पे है, एडिशनल रेट बैंड पे है, आपकी फर्स्ट 2,000 की इनकम हमेशा 0% पे टैक्स होगी। नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन। जेरेमी अर्नड एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 14,850, रिसीव डिविडेंड एंड 4,500, पे एज यू अर्न 600 आर was deducted in respect of employment income। आपने कैलकुलेट करनी है जर्मनी की इनकम टैक्स पेबल की अमाउंट। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। दिस इज हिज नॉन सेविंग इनकम एंड दिस इज हिज डिविडेंड इनकम। टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 14,850, right, and 4,500 is dividend income। सो ये टोटल इनकम आ जाएगी आपके पास 14,850 of saving and 4,500 of dividend income. In total it would be 19,350. Now consider that the personal loans you have to deduct from this, which is 12,570. So it will be 0, 8, 2, 2,000. Let me check this. 14,850 minus 12,570, it is 2,280. So plus 4,500, or here we will deduct this and find that this will be 6,780, right? So first we need to consider the non-saving income। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त हमने ये कंसिडर करना है कि नॉन सेविंग इनकम जो आपकी 2,280 की है उस पर 20% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो 228,556 इट विल बी 456. Then we need to consider that first 2,000 of your dividend income will be taxed at 0%, and this is the case either
the total income lies in a basic rate band or higher rate band or additional rate band. The remaining of the dividend income of 2500 will be taxed in accordance with dividend rate band, and that is 8.75%. So actually they are encouraging that individual will invest in companies के इनकम जो उन्हें डिविडेंड की सूरत में मिल रही है उसमें से कुछ ना कुछ उनको एग्जाम भी हो रहा है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना, और रिमेनिंग इनकम जो डिविडेंड की सूरत में उन्हें मिल रही है उस पर लो रेट पे टैक्स पे किया जा रहा है. सो दे आर इनकरेजिंग, HMRC इज इनकरेजिंग, टैक्स अथॉरिटीज़ आर इनकरेजिंग कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा की जाए. तो ये आ जाता है 218.75. सो हैंस टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी, आप इसे राउंड ऑफ करके 675 भी मेंशन कर सकते हैं. Now you have to do illustration 5 which is on PDF page number 124 and test understanding 2 which is PDF page number 125. In the previous question we have only considered the non-saving income and dividend income. Now in this question we are considering dividend income, saving income as well as employment income. So Mary received dividend income of 1800, bank interest 400 and she also has a trading income. और 3 डिफरेंट वेज में इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अगर उसकी ट्रेडिंग इनकम 15,000 है तब क्या कैलकुलेशन होगी, 50,000 है या 1,50,000 तो तब क्या कैलकुलेशन होगी. तो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट आएंगी. लाइक दिस इज सेड टू बी नॉन सेविंग इनकम, saving income and dividend income, and that is total. So dividend income 1800, bank interest 400. फर्स्ट हम लिखते हैं ट्रेडिंग इनकम और ये है 15,000 in the first case. Then bank interest which is 400. And dividend income which is 1800. So total is 15,000, 400, 1800 and that will be 17,200. This is said to be total income. Now you have to deduct the personal loans which is 12,570 from the non-saving income because TX यानी F6 के एग्ज़ाम के हवाले से रूल मेंशन है कि किस सीक्वेंस में आपने पर्सनल लोन्स डिडक्ट करना है. फर्स्ट फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम, देन अगर कुछ रह जाए तो सेविंग इनकम में से और फिर भी अगर कुछ बच जाए तो डिविडेंड इनकम में से. सो आफ्टर दैट द टैक्सेबल इनकम इज़ 2,430, 400 and 1,800, right? So it will be total 4,630. So again आपको सारे रूल्स कंसिडर करने हैं यहाँ पे. सेविंग इनकम नील रेट बैंड के भी, स्टार्टिंग रेट के भी और डिविडेंड इनकम नील रेट बैंड के भी. तो फर्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स लायबिलिटी और नॉन सेविंग इनकम पे. 2,430 ऑफ योर नॉन सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 20%. तो ये आ जाएगा आपके पास 486, राइट. अब चूँकि आपकी जो स्टार्टिंग रेट अप्लाई होते हैं यहाँ पे कि इस पर्सन की इनकम अप टू 5,000 जितनी भी सेविंग इनकम है वो 0% पे टैक्स होगी. इफ़ एनी पर्सन हैज़ अ नॉन सेविंग इनकम ऑफ 2,430, तो फ्रॉम 2,430 टू 5,000 जितने भी इनकम ब्रैकेट है 2,570 का, इतनी सेविंग इनकम 0% पे टैक्स हो सकती है. इस पर्सन की तो है ही सिर्फ 400, तो ये सारी की सारी 0% पे टैक्स हो जाएगी, राइट.
एंड देन अगर हम बात करें डिविडेंड इनकम की, तो डिविडेंड इनकम का नील रेट बैंड ये कहता है कि फर्स्ट 2000 ऑफ डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्स एट 0%. सही. सो ये टैक्स लायबिलिटीज की आ जाएगी 486. इन सेकेंड केस trading income is 50,000 and bank interest is 400 and dividend income is 1800. So अगर हम टोटल करें तो it will be 50,000 of non-saving income, 400 of saving income and 1800 of dividend income. तो ये टोटल हो जाएंगी 52,200 की टोटल इनकम. Now deduct personal loans which is 12,570 and the remaining income would be 37,430. No personal loans will be deducted from saving income or dividend income. So it remains the same. So it will be 39,630. Again tax liability calculate, this is said to be taxable income. Tax liability calculate करते नॉन सेव इनकम आपकी 37,430 है, इस पे 20% टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी. So it will be 7,486. Now स्टार्टिंग नील रेट बैंड अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस पर्सन की सेविंग नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज़्यादा है, लेकिन आपके पास सेविंग इनकम का नील रेट बैंड अप्लाई होता है जिसके मुताबिक अगर टोटल इनकम जो है वो 39,630 है, इट मीन्स इट लाइज ऑन अ हाई रेट बैंड. और अगर हाई रेट बैंड पे इनकम लाया करती हो तो 500 ऑफ इनकम ऑफ 500 ऑफ सेविंग इनकम कैन बी टैक्स एट 0%. लेकिन इस पर्सन की तो हाई इनकम 400, तो वो 0% पे टैक्स हो जाएगी, राइट. एंड अगेन 1800 ऑफ डिविडेंड विल बी टैक्स एट 0%. तो यही पॉइंट ये प्रूव कर रहे हैं कि चाहे टोटल इनकम आपकी बेसिक रेट बैंड पे लाया करती हो, हाई रेट बैंड पे लाया करती हो या एडिशनल रेट बैंड पे, फर्स्ट 2000 डिविडेंड इनकम का 0% पे टैक्स होगा. In the third part, they have given the amount of trading income as 1,50,000. This is 1,50,000. Bank interest is 400 and dividend income is 1,800. So total ये आ जाएगी 1,50,000, 400, 1,800. So total will be 1,52,200. Remember the rule about the adjusted net income? If the adjusted net income is 1,25,140 or more, if the adjusted net income is 1,25,140 or more, then in that case there is no personal allowance available. So इस person के लिए भी कोई personal allowance available नहीं है, because इसकी जो adjusted net income है वो आपके पास 1,25,000 से ज़्यादा है. So taxable income is 1,50,000, 400 and 1,800. It remains the same, 1,52,200. Now you have to calculate the tax liability of that person. First, नॉन सेविंग इनकम का जो 37,700 का पोर्शन है ये टैक्स होगा 20% पे. तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 7,540. देन
1,12,300 फ्रॉम 37,700 टू 1,50,000 जो रिमेनिंग इनकम है नॉन सेविंग इनकम, इट विल बी टैक्स एट 40%. This is 44,920. Right? Now we have to consider the 400 of saving income. 400 of saving income, इस सिलसिले में स्टार्टिंग रेट अप्लाई नहीं होता बिकॉज नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज़्यादा है. यहाँ पे सेविंग इनकम नील रेट बैंड भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि टोटल इनकम एडिशनल रेट पे लाया करती है. इफ द टोटल इनकम लाइज ऑन एडिशनल रेट देयर इज नो सेविंग इनकम नील रेट बैंड एप्लीकेबल. सो ये जो 400 की सेविंग इनकम है ये 45% पे टैक्स होगी. सो आई थिंक सो इट विल बी 180. नाउ अबाउट डिविडेंड इनकम 1800. फर्स्ट 2,000 of dividend income will always be taxed at 0%. So this is his tax liability. So हर तरह से हमने इसकी tax liability की calculation की. So now you have to try test understanding 3 in which the trading income is given as 11,615, employment income 13,500, bank interest 3,500, dividend income 2,000 and pay as you earn 330 was deducted from the employment income. So in this question we have more than one source of non-saving income, otherwise there is no complexity. Another thing that is added is qualifying interest payment. You know that this is said to be the relief. So we need to understand what is the sequence of deduction of relief. So first it is non-saving income, saving income, dividend and total. And the non-saving income, first he has some trading income 11,615. This is a question from the book, but it is important one, that is why I am solving this. Employment income is 13,500. This is also said to be your non-saving income. Then bank interest is 3,500. And dividend income is 2,000. So now we have to calculate the total income. Total income of this person would be 25,115. 3,500 of saving income and 2,000 of dividend income, and hence total would be 30,615. Now before deducting personal loans we have to deduct the qualifying interest payment. Remember that relief को पहले deduct किया जाता है and then फिर आप जो है deduct करते हैं personal loans को. सेकेंड बात ये कि हमें ये कैसे पता चला कि qualifying interest payment है, हमें पर्पस तो गिवन नहीं है, बट जब वर्ड qualifying मेंशन कर दिया गया है इसका मतलब है कि दिस क्वालिफाई फॉर द पर्पस, सो वी हैव टू डिडक्ट दिस एज रिलीफ. तो रिलीफ भी इसी तरतीब से डिडक्ट किए जाते हैं जैसे हमने बात की थी अबाउट पर्सनल लोन्स. सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम. एंड अगेन अब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी 24,115, 3,500, 2,000 and hence total would be 29,615. अब अपने पर्सनल अलाउंसेस में से डिडक्ट करना है 12,570. सो 24,115 में से 12,570 अगर आप डिडक्ट करें तो इट विल बी 11,545. और यहाँ से भी हम डिडक्ट करेंगे तो इट विल बी 13, 16, 17,000
एंड 45। ये आ गया आपके पास इनकम, टैक्सेबल इनकम। सो यहाँ पे इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी 11,545 पे 20%। So it will be 2309, राइट। देन इसके बाद हमने ये कंसिडर करना है कि क्या सेविंग इनकम का स्टार्टिंग रेट अप्लाई होता है। आंसर इज नो। क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि आपके पास जो इनकम है नॉन सेविंग इनकम दैट इज मोर देन 5,000। सेकेंड बात, सेविंग इनकम का नील रेट बैंड अप्लाई होता है। टोटल इनकम अगर हम इसके लिए देखें तो दैट इज 17,045। तो 17,045 की इनकम के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो ये बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है, और अगर बेसिक रेट बैंड पे लाया करती है तो फर्स्ट 1,000 ऑफ सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%। रिमेनिंग 2,500 ऑफ सेविंग इनकम will be taxed at 20%, and that will be 500, and then dividend income which is 2,000, and we know that first 2,000 of dividend income is always exempt, so it is 0. So this is total tax liability 2809, and you have to do test understanding 4 which is on PDF page number 128. Next are some questions. Reagan received the following income during the tax year, and you have to identify which are taxable for income tax purpose. तो स्टार्टिंग में हमने जो रूल पढ़े थे कि कौन सी सेविंग इनकम है, कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम है, तो वी हैव टू कंसिडर विच इज़ taxable income. And then Sasha's income for the tax year is comprises of salary of 1,40,000 and dividend of 20,000. She is not entitled to a personal loans. So in that case we need to consider कि कितनी इनकम, हाउ विल हर डिविडेंड बी टैक्स। हमसे सिर्फ ये पूछा गया डिविडेंड कैसे टैक्स होगा, तो वी नीड टू कंसिडर कि आपके पास फर्स्ट 2,000 डिविडेंड इनकम का एग्जाम्प्ट है 0% पे, और बाकी जितनी डिविडेंड इनकम जिस रेट बैंड पे लाया करती है उसके मुताबिक रेट अप्लीकेबल होगा। सो यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है कि जिसमें टैक्स पेयर इन्वेस्ट करता है और वो मनी जितनी भी इसने इन्वेस्ट की है वो एग्जाम्प्ट है टैक्स से। 22-23 के लिए ये अमाउंट जो है वो 20,000 है पर पर्सन, और वो कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट की जा सकती है और स्टॉक एंड शेयर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट की जा सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना प्रोपोर्शन 20,000 की लिमिट का किस टाइप में इन्वेस्ट किया जाए। स्पाउसेस और सिविल पार्टनर के लिए अपनी अलहदा लिमिट्स हैं, एक इंडिविजुअल की ये लिमिट है 20,000। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट जो कैश में है उसको ओपन करने की एज लिमिट जो है वो 16 ईयर्स है। मींस कि कम से कम 16 ईयर्स एज होगी तो वो एक पर्सन कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन स्टॉक एंड शेयर्स ISA ओपन करने की एज एटलीस्ट 18 ईयर्स है। बेनिफिट इसके क्या है कि इनकम जितनी है इसमें 20,000 वो एग्जम्प्ट है टैक्स से, और जब आप डिस्पोज करते हैं इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के कोई भी शेयर्स को तो उस पर आपको गेन हासिल होता है, वो गेन भी आपका कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट है। कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि कम से कम इतने अरसे आपने शेयर्स अपने पास होल्ड रखने हैं उसके बाद आप सेल करेंगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। सो विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम द अकाउंट एट एनी टाइम। कैश ISA में आपके पास बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट और नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो है शामिल हैं, वेयर द इनकम इज़ नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जहाँ पे इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है टैक्स से। स्टॉक एंड शेयर ISA, इन्वेस्टमेंट इज़ अलाउड इन शेयर एंड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इन केस ऑफ स्टॉक एंड शेयर ISA इन्वेस्टमेंट आप जो है किसी भी शेयर और सिक्योरिटी में कर सकते हैं, बट वो लिस्टेड होने चाहिए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज कहीं का भी हो।
Now question is, Mike has invested 8,000 in August 2020 in a flexible cash ISA. In July he invested a further 5,000. So ये हो गया total 13,000 in that cash ISA. He withdrew 4,000 from the cash ISA in December 2022. Mike is now considering investing more cash into the cash ISA before 5th April 23. What is the maximum amount that Mike can invest into the cash ISA for the tax year 22-23 in addition to his investment already made? So he has already 12,000 at the moment. First he invested 8,000, then he invested 5,000. The investment in cash ISA is now 13. But when he withdraw 4,000 from this, the remaining investment becomes 9 in fact. 13 minus 4, 9. 9,000. Now he has 9,000 in his cash saving individual saving account, and he can further invest 11,000 to approach the limit of 20,000. Now as accrued income scheme, UK government issues government securities, and on these government securities interest is paid to the holder of the gilt who has investment at that time, right, in a fixed amount on fixed date. Let's say you can say the interest could be paid on 30th June and 31st December. In that case, it might be possible a person has sold the investment on 31st October. Now the investment is in the hand of the second person who has purchased on 31st October. The second person who purchased the investment on 31st October will receive the 31st December's interest. But the interest of a 6-month period is not his right to receive. He has held the investment for the period of only 2 months, from 31st October to 31st December. So he has a right to receive interest for the 2 months period only. So that 2 month period interest on investment will be considered his income. Like for example, Jin owned 20,000 nominal value 5% UK government loan stock. Interest was payable on 30th June and 31st December each year. Jin sold the loan stock to Ming on 31st October 2022 for sale proceed of 21,333, including accrued interest of 333 for the period between 1st July to 31st October, and that was calculated as value of investment, rate of interest, and 4 months period, holding period. So first, from the point of view of Jin, Jin owned 20,000 investment, right? And Jin sold the loan stock to Ming on 31st October. So it means on 30th June, the interest received by Jin on 30th June, it will be recorded as full in his Jin's income, and that would be 20,000 multiplied by rate of interest is 5%, multiplied by 6 divided by 12. This is the first interest received by Jin, 500. This 500 is said to be the income of Jin. First 500 is said to be the income of Jin, right? And then from 30th June to 31st October also the stock is held by Jin. So it is a right of Jin to receive income for this period of 4 months. And this 4 months period has been calculated as 333. So the total amount which is included in Jin's income would be 833. While in case of Ming, no doubt he has received interest income on 31st December, and that was 500. But he is not entitled to the interest of 333, which was not under his holding period. मीन्स जो 30th जून से लेकर 31st अक्टूबर तक इंटरेस्ट जो रिसीव किया गया है, दैट इज़ द राइट ऑफ जिन, नॉट मिंग्स राइट. सो दैट इज़ वाई मिंग ने बेशक 31st दिसंबर को 500 का इंटरेस्ट रिसीव किया, बट he is not entitled to receive the interest for the first 4 month period, July, August, September, October. So that interest will be deducted from his income, and his income will be calculated as 167.
Same is the case of next. On 1st May 2022, Sim bought some 5% gilts. They have a nominal value of 50,000 and pay interest on 30th June and 31st December each year. He paid 52,000 on 1st May 2022 and sold them for 54,500 on 31st December 2022 to Red. How much interest is assessable on Sim in the tax year 22-23 in relation to these gilts? So in this question, Sim has purchased these investment on 1st May 2022 and sold them for 54,500 on 31st December 2022. The holding period of Sim is from 1st May to 31st December. This is a period of 8 months and you have to calculate interest for the 8-month period, and that is considered as Sim's income.